very strong message on what is considered to be one of the most contentious topics ever since his government took over, the status of Indian Muslims in India. Even as a committee has invited stakeholders to opine about bringing about Uniform Civil Code, now popularly known as UCC, in the country, Narendra Modi focused on the inequalities faced by citizens because of different rules. कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। Next, he spoke about triple talaq, which became a law in 2017, if you may recall, and it was actually something which the Supreme Court also spoke about and outlawed the Islamic practice of triple talaq, which allowed a Muslim man to divorce his wife in minutes just by saying talaq, that is divorce, 3 times. Modi highlighted the status of Muslim women, highlighting how unfair it was for women, and also asked why countries like Pakistan and Bangladesh had banned it years, or rather decades ago. मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं, माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। The Prime Minister then spoke about Pasmanda Muslims and how several governments had ignored their backwardness. हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे
और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमंदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमंदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं। कितनी ही जातियां, ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। Now, this is obviously Modi's big outreach, which is there for all of us to see towards Muslims, even as his detractors have accused his government of several biases towards the community. But then there are two Modis at work. One who happens to be with the BJP, obviously, and the other who's first and foremost the Prime Minister of all of us, all Indians. Will this work for Modi, who is known to turn tides of several elections? Or will this just be seen as an attempt towards wooing the community during the election season? Let's get into this debate. In the studio with me is my colleague Pankaj Mishra. He is joining us. Ali Anwar Saab is also joining us, who is head of All India Pasmanda Muslim Mahaz and former MP of Rajya Sabha. Dr. Navneet Anand, senior journalist, is also joining us on Zoom, and Manasvi Thapar, who is a lawyer and political analyst, and last but not the least, Gautam Mukherjee, senior journalist. A very, very warm welcome to all of you. How do you look at it, Pankaj? I mean, it's, I think, after a long time, when we were sitting in the newsroom, we all jumped up, Right. We said, ye kya ho gaya, So, do you think that, I mean, like I said, and is it the Prime Minister speaking, or is it, I mean, forget about the BJP karyakartas, forget about who he was addressing, the message came to all of us, or it is just because elections are on the anvil in Madhya Pradesh? Well, as you rightly mentioned, Sudha, there are lots of aspects to look into as of now, as far as this Prime Minister's speech is concerned. Elections, yes, any discerning audience would say that चुनाव के समय तो हमेशा यही बातें होती ही हैं. But this time around, what Prime Minister Modi has reiterated and underlined is the fact that how a BJP government, which generally is under fire for negating the interests of the minority, especially Muslims, this time around Prime Minister Modi tried to undo that notion and put the blame squarely on the opposition, especially Congress, for having negated these traditionally backward Muslim
subcaste, subsects, which he mentioned, about Pasmandas, about how other, sects in Muslim community have faced the hardships in in the past. Now, the question is this just a political gimmick that Prime Minister Modi came up with, or is there some fact to back this up? So I was, before the show, it turned out that when we were discussing the idea, the reason behind doing the show with our editor Kartikeya Sharma, so he mentioned a fact that there was a report by Economic Advisory Council member Shamika Ravi, which spoke about the reach of the amenities, the government amenities, to the poor people in the hinterlands of the country. Now, the data, the long and short of the data is that, be it electricity access, be it bank account access, mobile phone access, or for that matter toilet and access to cooking gas, all these aspects, the recent report of the Economic Advisory Council member Shamika Ravi says that minorities, especially not the majorities, primarily Hindu, but the minorities have been the biggest recipients of it, and there are numbers backing them also. And Muslim minorities especially have benefited more from it. So the talks of whether this government is pro-Muslim or not, this report, which came straight away to my mind and to Kartikeya's mind, was that there is no evidence of discrimination. There isn't, but I'm going to play the devil's advocate. I mean, they are a minority, and if they are getting all the benefits, it's their right, right? No one is doing them a favor. I mean, if the central schemes, whether it is Griha Lakshmi, whether it is Ujjwala, whether it is anything, they are the citizens of this country. Prime Minister, but the point is that the whole conundrum is about, there is supposed to be no caste in Muslims, but there is, and those who are backward and most marginalized, most oppressed, it is just that they do not get everything that perhaps the majority community gets as being oppressed. Let me get Ali Anwar Sahab into this. Ali Anwar Sahab, how do you, आप क्या इसको कैसे देखते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री जी ने अभी ये घोषणा की, he made this announcement कि Pasmandas have been, subsequent governments have not done anything for them, और उनको बहाल करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए. आपको क्या लगता है कि ये वो प्रधानमंत्री है जो सबका, और सिर्फ इलेक्शंस पर उनकी नजर है? देखिए, अभी बहुत गौर से मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री जी को, शायद मध्य प्रदेश में बोल रहे हैं और वहां चुनाव होने वाला है. विदेश दौरा के बाद शायद ये पहली उनकी मीटिंग है. तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पसमानदा, ये पसमंदा नहीं है, पसमानदा है. हाँ. तो चलेगा इतना उनके लिए. सब तो हमने चलाया है, लेकिन उसमें उच्चारण में थोड़ा सा सुधार हमने बताया. तो कहने का मतलब, प्रधानमंत्री जी ठीक कह रहे हैं कि मुसलमानों में कई जातियों का, बहुत सारी जातियों का, करीब 1 दर्जन जातियों का नाम गिनाया है, और उसमें इन्होंने बताया है कि उसमें धोबी भी होते हैं, उसमें हलाल खोर होते हैं, भंगी कहते हैं उसको, खाकरोब कहते हैं, हेला कहते हैं, कहीं होलैया कहते हैं, तो स्कैवेंजर हैं ये. तो इस तरह की जातियां हैं, बंजारा है, मदारी हैं, सपेरा है. तो भटियारा का भी नाम दिया. सही बात है कि मुसलमानों में ये सब जातियां हैं, और बजाते सरकार की जो सूची है अदर बैकवर्ड क्लासेज की, उसमें इन जातियों का जिक्र है. मुस्लिम मोची हैं. तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इनको हम मदद करना चाहते हैं. तो प्रधानमंत्री जी खुद ही कह रहे हैं कि मुसलमानों में मोची भी हैं, भटियारा भी हैं. भटियारा डेरोगेटरी शब्द है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, है उस सूची में है, तो इसलिए हम भी नाम ले रहे हैं और वो भी नाम ले रहे हैं. ये हकीकत भी है, और सरकारी सूची में भी, सेंट्रल लिस्ट में भी है, स्टेट लिस्ट में. तो जब ये जातियां हैं, हलाल खोर कह रहे हैं, ये भंगी लोग हैं, स्कैवेंजर, मैला ढोने का काम करते हैं, मैला साफ करने का काम करते हैं. तो भाई पसमानदा मुस्लिम तो मांग कर रहे हैं. हमने एक लंबी चिट्ठी भी लिखी. सबसे पहले पसमानदा शब्द को अपने जुबान पर प्रधानमंत्री जी लाए पिछले साल वहाँ हैदराबाद की मीटिंग में, फिर दिल्ली की मीटिंग में. तो हमने शुरू में ही एक लंबी चिट्ठी लिखी कि भाई इतनी हमदर्दी है आपको,
तो पसमानदा में जो अति पसमानदा हैं, जो दलित हैं, जिनको रजील कहा जाता है, हाँ, उनको रजील बने होता है निकृष्ट, नीच, कमीना। तो इस तरह की जातियां हैं, तो जिनको समाज सोशल स्टेटस उनका ये है, तो उनको एससी का स्टेटस दे दीजिए। तो उन्होंने स्टेटस देने के लिए एक ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट ने कहा कि दे दीजिए, सच्चर कमेटी ने कहा सच्चर, दे हाँ दीजिए। बिल्कुल, हाँ। तो सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी को तो बिल्कुल नकार दिया, मानते ही नहीं है बीजेपी। प्रधानमंत्री जी की पार्टी कहती है कि नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे। चलिए, नहीं मानेंगे, आपने एक नया कमीशन बना दिया। केजीवाला कृष्णन साहब रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, उनके नेतृत्व में इस बात को साहब के बेंच में जब आया और सुनवाई होने वाली थी, तो उसको रुकवाने के लिए कहा कि रुक जाइए, से हम इसके लिए एक कमीशन बना रहे हैं, आप इस पर सुनवाई रोकिए। तो कमीशन बना दिया। तब तक आ गए चंद्रचूड़ साहब, उनका कार्यकाल बहुत कम था, यू ललित साहब का, चंद्रचूड़ साहब आ गए। तो इनके आने के बाद जब ये सुनवाई शुरू किए, तो इन्होंने कह दिया, एफिडेविट दे करके कह दिया कि नहीं, हम इस दिन को देने के पक्ष में नहीं, ये तो विदेशी मुसलमान है, इनके साथ तो छुआछूत नहीं, भेदभाव नहीं होता है। ये आज तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज में भी उनके साथ भेदभाव होता है। मैं अली अनवर साहब, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि कैसे उन्होंने अनाउंसमेंट जो की, उस वो आप कह रहे हैं कि वो मात्र काफ़ी नहीं है। और जिस तरह की मैं पंकज जी से भी मैं यही कह रही थी कि उनकी मांग थी कि रिजर्वेशन उनको दिया जाए, ताकि वो इतने पिछड़े हैं, इफ दे आर सो मार्जिनलाइज्ड, हाउ टू ब्रिंग देम इनटू द मेन स्ट्रीम, बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली, and in other words, you know, in several others, I know that there is a conundrum because Islam, you know, does not recognize caste, but what to do? I mean, they are, like he said, you know, he spoke about Sikhdars, he spoke about others also. Dr. Navneet Anand, let me invite you into the debate. What do you think, sir, explains Modi's outreach towards Muslims? What is the explanation? Good evening, Sudha. Thank you so much. And to me, this has to be seen as a continuum of an endeavor by Prime Minister Modi as well as the BJP to adhere and stick to what they profess in the form of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. Based on what I read, what I hear from leaders and my own travel experiences, I can tell you that on the ground, this is creating impact. Ali Anwar Sahab will know better. But as a journalist, as my profession takes me to places, I realize that the appeal and intent of Prime Minister is creating reasonably decent impact. What impact do you see? So, I mean, for impact instance, in people Bihar, may say, no, I'm sorry, I'm stopping you here because I'm a fellow journalist and of yours. Dr. Anand, on the one hand, people can say whatever, but they may vote differently. So I think all this about creating impact is actually a mirage now. Not really. On the ground, things may be changing, and even if it is very, very incremental, Sudha, I would think this is a gigantic change. So, for instance, in my recent visit to Bihar, we met people from the community, Muslim community, who spoke not only very highly of Modi ji, and they said that we are not going to vote, of course, for obvious reasons, but they said that women today are largely voting. We know of women in our own family, you know, and others who are either inclined or have begun voting. Right. Right? Okay, so let me. That is the kind of impact we are looking at. Dr. Anand, I'll come back to you because I'll have to introduce the other guests also. You know, Gautam Mukherjee, you know, I want to ask you that is the PM right in saying that, you know, the government schemes have benefited all? There has been absolutely no kind of a bias shown. I stuck my neck out with my very dear colleague Pankaj and I said, it's their right. What will you say about it? Well, you know, at an estimate, about 40% of the welfare has gone to Muslims, which is commendable considering that the Muslim population, all in all, is around 20% or less.
So that is good, and it is because there are concentrations of Muslims that in certain areas, and since this is, as you rightly pointed out, a government welfare provision, many of them, so they should go to all irrespective, and you can't say, well, since you're in a cluster, I'll skip you. What Modi may be trying to do, based on whatever information he's been given, is to drive a wedge between the high-class Muslim, the Saids and so on, and the lower-class Muslims, because they constitute 85%. Now, if he succeeds to any degree, it is better than 0 votes from the Muslims, no matter what, because BJP is a Hindu communal party, according to the opposition. The other aspect is it certainly might enhance the PR value of a Muslim outreach, irrespective of whether it yields any actual votes. Right. If women are voting, they are not in a large number, despite triple talaq. So all of it is a new gambit, and there must be some calculation behind it. I can only think that it's trying to drive a wedge. Right. Manasvi Thapar, let me bring you in. I want to ask you, he spoke about the Uniform Civil Code. Do you think that's even practical? I mean, Uniform Civil Code, the detractors have said, will not work because it is more cultural and social, the way we are. Also, you'll be interfering into personal laws of different communities. This cannot really work. But do you think that what Prime Minister Modi said about UCC is even practical, sir? Sudhaji, UCC has been on the BJP manifesto since last 16 times. It has been mentioned in their manifestos. But before I get into the practicality of it, the biggest question what comes to my mind as a political speaker would be, is there a political will out of it? They have been in power since 9 years, a consistent 9 years, a very strong political domain they are into it, and they can pass UCC very smoothly right now. And they could have done it much earlier also, but they have not done it. Is there a political will or there is an electoral will? There is a difference between both the two. UCC has been in their manifesto in 2014 also, and what is very interesting, Sudhaji, is exact word to word the same thing of UCC has been mentioned in the 2019 but Manasvi, ऐसे थोड़ी आप lawyer हैं, so you are better in a better position. The committee, the stakeholders had gone back. I mean, there was no consensus on it. It's not that I can pass the law sitting there just because it's my rule. No, Pankaj, that's what how the earlier committee had gone off, and now the new committee has again, invited opinions from several people. So unless that committee speaks, and then perhaps, you can go ahead. Manifesto में तो था, लेकिन law ऐसे चुटकियों में तो नहीं बनता. सुधा जी, मैनिफेस्टो में था, लॉ चुटकियों में नहीं बनता, ये तो सबको पता है. मतलब ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को नहीं पता. द पॉइंट, ये कमिटी बनाना और कमिटमेंट होना दोनों बहुत अलग चीजें हैं. कमिटी बना सकते हो आप, कमिटी बदल भी सकती है, but the reality is, where is the real commitment, where is the real will? In 1996 also there was in your manifesto, then again it was in 1999, then 2004, 2009, 2014, 2019, and again 2024 during the, now we know it's an election year, the next year. So you bring this topic back, but is there a my basic question, is there a real political will out of it, or it is just going to be a political electoral? That's what I started the conversation saying that. Ali Anwar साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, 2 सवाल पूछूंगी. तो पहले सवाल ये है, आपको क्या लगता है कि ये सब जो कह रहे हैं, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं ये बड़ा बहुत अच्छा और बड़ा जो है आउटरीच है मुसलमानों के तरफ, कि कहना ट्रिपल तलाक की बात करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना, और जो पिछड़े मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके बारे में बात करना. आपको क्या लगता है ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, या फिर आपको लगता है कि ये हमारे देश का प्रधानमंत्री बोला आज, जो सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास, उन सब की सराहना करता है? क्या कहते हैं आप? काश ऐसा होता कि प्रधानमंत्री जी के साथ ट्रस्ट डेफिसिट जो है,
सिर्फ मुसलमानों का नहीं, धीरे धीरे बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वो जो करते हैं, वो कहते हैं, वो करते नहीं। तो कहने का मतलब ये है, देखिए सबसे पहली बात कि ट्रिपल तलाक पर हम बात आते हैं। तो आज सुन रहे थे आप से कि ट्रिपल तलाक पर ये बोल रहे हैं, तो ट्रिपल तलाक का बिल का अब कौन विरोध कर रहा है? मुसलमान, जितने मुस्लिम धार्मिक संगठन हैं, उन सब लोगों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मिल्ली काउंसिल, जमात इस्लामी, सब लोगों ने इस जमीयत उलमाए हिंद, सब लोगों ने उसको मान लिया। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा क्या हुआ? अब उसको पुरानी बातों को क्यों दोहरा रहे हैं? तो सबने मान लिया है ट्रिपल तलाक, और उसका क्या नतीजा है? नतीजा तो ये है कि और ज्यादा तलाक की, न तलाक देते हैं न बीबी को साथ रहते हैं। तो बिना तलाक के बीबी को तलाक भी नहीं देना, उनको साथ रहने। अभी प्रधानमंत्री जी ये बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इसकी क्या त्रासदी होती है, और कोई महिला ही समझ सकती है कि उसका शौहर तलाक भी न दे और उसको अपने साथ रखे भी नहीं, उसको खेवा खर्च भी, उसको गुजारा भत्ता भी नहीं दे। ये क्या है? तो ये बढ़ गया है, ये भी सर्वे आया है। हाँ, मुझे अखबारों क्योंकि मैं महिला हूँ और यहाँ पर सिर्फ मैं मात्र महिला हूँ पंकज, मैंने जो नोटिस किया, आई नोटिस्ड ही सेज कि जब लड़की को घर वापस भेजा जाता है उसके माँ बाप के पास, मे बी इट्स अ वेरी इमोशनल पिच, पर यहीं पर बेटी पढ़ाओ कम्स इनटू प्ले। अगर आप अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे तो वापस आकर बोझ नहीं बनेंगी, मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं डोंट यू फील, ऑन द वन हैंड ऑफ कोर्स आफ्टर द शाह बानो fiasco by the Congress party, don't you feel that the triple talaq law, you know, banning the 3 times talaq, 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 is one of the most beneficial for the Muslim sisters? Yes, it has been indeed. And see, I mean, as Mr. Anwar is saying, that now there is not much opposition to it, or not at all. But yes, there was a time when it all started, then there were voices which said that it is infringing on the cultural diversity, the cultural aspect of the Muslim families. Now, the question is, while Prime Minister mentions that it is such a sad state of affairs when a daughter returns home. And as you mentioned, from the grassroots level itself, the education part should be taken care of. Now, Sudha, we need to take a look at it here, whether this is possible or not. On one hand, Prime Minister Modi spoke of the marginalized Muslim families. That's a reality. Not much has been done for them, as Prime Minister Modi mentions. And on the other, we are talking about the progressive part of it, the education part of it. To bridge that gap, I think the issues, the initiatives that this BJP government launched, to a certain extent, I wouldn't say particularly targeting a particular community in minorities, but that has reached and that is reaping benefits. And that's the reason why the focus on, say, Ujjwala Yojana, gas cylinders, the focus on girl child education, it cuts across all sects and communities. So in that regard, I think the job is done there. Yeah, Dr. Navneet Anand, you know what Pankaj Mishra said, and I would say, recently there was Modi Mitra. They had felicitated a lot of prominent Muslim intellectuals and scholars in Uttar Pradesh, and also Man Ki Baat is now in Urdu. It's called, Wazir-e-Azam Modi Man Ki Baat Urdu mein. So, there is a lot of kind of an outreach which has been in place. So, would you, do you think that will this Modi's outreach make BJP more acceptable to Muslims, whether they are upper caste? Unlike what Gautam Mukherjee said, he's trying to drive a wedge between those who are, upper caste and those who are marginalized. Do you think this will be more acceptable to will he be more acceptable to the Muslims? Is now a kind of winds of change blowing, as it were? Absolutely. I would be inclined to believe, having seen and observed what's been happening. Certainly, you saw he just came, back from Egypt, where there was this large welcome. Someone would say that it is only, those one particular sect of the Muslim. I mean, they are Muslims. The fact is that PM Modi is also a very, very smart politician, at the end of the day.
by doing all that he's doing, and his government, which is translating on ground, so COVID, for instance, Pradhan Mantri Gramin Kalyan Yojana, वो देख के थोड़ी देता है कि आप मुस्लिम हैं तो आपको नहीं मिलेगा. So that there are vested interests, there are those who would want the situation, the status quo to continue. But the fact is, and as I told you, that on the ground, even if incrementally, but the change is visible. Whether it will endure, I think it's difficult to say. But even if marginally BJP is starting to make a dent with the aura and appeal and the intent of the Prime Minister, I think it is certainly worth it. Right. Gautam, on the one hand, we have just now we heard about how, Naveen was talking, Navneet, I beg your pardon, was talking about, the kind of benefits that they have drawn, how perception is changing on the ground. But you know what? And BJP has time and again accused the so-called upper caste Muslim for saying they are not with us. So let us just, concentrate on those who are marginalized. They keep bringing up lynchings, they keep bringing up CAA, NRC, they keep bringing up several other, love jihad, the conversion law, the cow slaughter law, everything. So do you think that this, when he talks today, what he has said about UCC, about triple talaq, and also about, the third issue, you think that it's kind of making the change, that he may be more acceptable to the Muslims? Well, it is true that, in the Waqf board, you won't have many Pasmandas. Wherever they are in power, it is usually the higher caste. And when it comes to crowd mobilization and putting pressure on the government, then they get around to all the lower caste Muslims and use them as a pressure. Is the Muslim community doing very much? Even the Oasis, who's a very rich man, doing anything about the poor Muslim? When we were coming to independence, the Muslims were some 22% were educated. Today, that is 4%. 4%. Yeah, Gautam, you brought up Owaisi. There are dozens of hundreds of madrasas, but it does not qualify them for anything in the mainstream. Yeah. So what are they good for? I mean, they do know the Quran, no doubt, but how do they get employed in the 21st century? So what are they? Puncture wallahs, as they're often called? Or mechanics, puncture wallahs, carpenters. This is a fact. You look all around you. What is the poor Muslim? He's a very hardworking chap. He is making a living from the age of 12 and 13. But how many of them have an educated job? Right. Most of the delivery people are Muslims. You look everywhere. It is the guys who come for blood tests, all Muslims. Because these are jobs which don't require qualification much, but they do require backbreaking work from morning till night. And that's what they're getting, because and thank God no for avenue. them. Thank God for that workforce, because disparaging terms have been used for them, which I think we should now realize as a mature democracy not to use. Speaking of Owaisi, Gautam spoke about Owaisi. Let's listen in to what Owaisi had to say. यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे. पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे. मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं. 300 MP आपका ने है,
आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप? थर्डली, फोर्थली, सेक्शन 21A स्पेशल मैरिज एक्ट जो है मोदी साहब करेंगे, अभी सर करेंगे, नागालैंड मिजोरम निकाल सकते। एक मणिपुर को नहीं जा सक रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी, जहां पे 300 चर्चेस को जला दिए गए, और आप 371 निकालेंगे क्या? बताओ हमारे को। I want to bring in the other guest, and thank you so much for your patience. Manasvi Thapar, I want to ask you that, just mentioning the Pasmandas, is that enough? All they wanted was reservation to be on even keel, as it were, with those who are backward amongst the Hindus. By just acknowledging that, of course, they are backward and subsequent government have not done anything for them, will that suffice? Sudhaji, we have to understand that Prime Minister Narendra Modi ji is the biggest star campaigners of Indian political arena, and he knows how to have an outreach. But when it comes to the doability or the givability index, I don't think he ever reaches even half the mark what he says. Kathni or Karni mein, there is a tremendous gap between both of it. What they want, what he says, and what he can do. There are three different things, and he is not matching at all. He's very good at oratory. He's very good at making speeches as per the relevant times. He knows how to outreach to the voters, and he knows what they want and how do we have to create that environment around that election, that he's the biggest star campaigner and he's the one who can take the country forward, or the Muslim Pasmandas forward. But the reality is that is not where even close to what he wants. He just want is a vote. After getting the vote, I don't think he's going to come back. We know what happened in Manipur. It's a classic example. While Manipur was burning, he was campaigning in Karnataka. So this is what is going to happen. You know what you want. You know what to deliver. You know how to have that entire media talk around what you want that narrative to be. Today it is UCC because you want this to be the action, but we will not talk or discuss from the union cabinet about Manipur. If this would have been a Congress state, all the union ministers would be giving a bite on Manipur if it would have been ruled by the Congress. But the reality is what you actually want. How do you want the country to move forward? The only way is to create a vote bank which is going to benefit to you. Now, if you are losing vote bank somewhere else, you want to reach out an outreach program for Pasmanda Muslims. That's a great thing for BJP, but is it good for the country? This is something in this panel, except for Dr. Navneet, I think everyone is kind of doubtful about, because I started this conversation by saying, BJP is Modi or Pradhan Mantri Modi? Who spoke today? Who do we recognize? Ali Anwar साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो पासमंदा हैं उनको सिर्फ और सिर्फ ये जो इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने, उससे वो लोग सेटिस्फाइड हैं या उन्हें अब सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन चाहिए, ताकि उस कम्युनिटी को भी बहाल कर सके ये देश और उनको भी आगे बढ़ाकर आगे ले जाया जा सके? तो इज पासमंदास, विल देयर बी हैप्पी विथ रिजर्वेशंस ओनली नाउ? इज दैट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर सर? नहीं सुधा जी, आपने ठीक कहा। मैंने शुरू में देखिए, सिर्फ रिजर्वेशन का ही सवाल नहीं, आपने बताया ही मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, बुलडोजर जो चल रहा है, बिल्किस बानो कौन, वो भी तो पसमानदा थी गुजरात में, उनके स्टेट में, और मोदी जी की अपनी जाति घाची बिरादरी की ही है वो लड़की, महिला। तो कहने का मतलब वो सबसे पहले तो उनके इज्जत आबरू, जान माल और भय, बिना डर के यहाँ रहने का सवाल है। एनआरसी ला करके, सीए ला करके किस तरह से, इसका भी मकसद जो है सिविल कोड बनाने का, इसका भी मकसद यही है। ये इनके पास कोई योजना अभी तक तो कोई कुछ नहीं बताया कि क्या घटाएंगे, क्या जोड़ेंगे, उसमें कैसे एक करेंगे। आदिवासियों के अलग कानून है, दूसरा आप चले जा रहे पूर्वोत्तर भारत के लोगों में अलग अलग कानून है, अलग अलग जातियों के अलग अलग समाजों के अंदर रस्म रिवाज है। कैसे, तो पहले इनकी योजना का है, ये कुछ बताते नहीं है। दूसरी चीज, हमने इनको एक लंबी चिट्ठी लिखी, उनमें बताया कि भाई आप पसमानदा से स्नेह की बात कर रहे हैं, पसमानदा आउटरीच की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये बुलडोजर चलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसके वर्स्ट मिक्सिंग, लव जिहाद के वर्स्ट मिक्सिंग, आपको काउ स्लॉटरिंग के नाम पर जो आप मारते हैं लोगों को, आपके लोग मारते हैं, जहरीले बयान देते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, तो 99% लोग उसमें पसमानदा होते हैं।
तो जब तक इसको, इसीलिए हमने शुरू में कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट है, ये करते कुछ और हैं प्रधानमंत्री जी और करते कुछ और हैं, और इनकी पार्टी के लोग, और ये लोग कपड़े से पहचानने की बात कीजिएगा, आप बटन यहां दबाइएगा, आपको शाहीन बाग में करंट लगेगा, ये क्या क्या बात बोलते हैं। अली अनवर मॉब साहब, लिंचिंग में, हाँ। अली अनवर साहब, मैंने दखल दिया आपकी बातचीत के बीच में, मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम ये सब दरकिनार कर कर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, ये जो रंजिश है हम सबके दिल में कि आपने हमें ये कहा, बटन दबाना, करंट लगना शाहीन बाग में, और उस तरफ वो लोग जो हैं वो पंचर, तब तक मुझे लगता है कि पसमंदा बहाल नहीं हो सकेंगे। नहीं, गर्दन पर तलवार तो पहले हटाइए। हम सरकार से, हुकूमत से कह रहे हैं कि हमारी गर्दन पर तलवार रखे हुए हैं जो, और उसके कोई अमीर मुसलमान, कोई जमींदार मुसलमान आईएएस आईपीएस जो कर लिया है वो उसका विक्टिम नहीं होता है, वो उसके विक्टिम होते हैं कमजोर लोग जो फुटपाथ पर रहते हैं, पंचर साटते हैं, जो गाय पालने का काम करते हैं, उनको काउ सैलरी के नाम पर क्या हुआ हरियाणा में, क्या हुआ राजस्थान में, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में और जगहों पर, अभी उत्तराखंड में क्या हो रहा है, लोग लव जिहाद के नाम पर कहां कैसे गांव छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि इस तरह का स्कीम पहले बंद कीजिए, बंद कराइए। आप भी संयम बरतिए, आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके सांसद, और जो आरक्षण की तो बात है ही, लेकिन सबसे पहले तो आदमी को जीने का अधिकार, लेकिन उन्होंने एक पहल की कि नहीं, जीने का अधिकार साहब, उन्होंने एक पहल की कि नहीं? आज क्या पहल तो करी। बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट से सजायाफ्ता जो कैदी हैं उनको छोड़ करके और उनका जुलूस निकाल करके और उनका स्वागत पहना करके, यही पहल है उनके स्टेट में, यही पहल है। चलिए, आज भी क्या माने बात है, पहले हम कह रहे हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको पूरा करने के लिए आप शांति का माहौल बनाइए। ये देश सबका है, सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोगों का है। आप लड़ाने के लिए और वोट पाने के लिए, डिवीजन करने के लिए दलितों में भी बांट रहे हैं, आदि वहां मैती और कुकी लोगों के बीच क्या हुआ, एक दिन में ये हुआ है मणिपुर की हालत जी। Pankaj, you know, this is what I want to finish with you because we are running out of time. Look at it. I mean, there is, because he spoke about Pasmanda, and Ali Anwar Saab is an important player in it. He started it all in 98, I think. Trust deficit. Do you think that there has to be, the olive branches have to be several branches? And, you know, even if we had announced reservation, let's say, I'm speaking hypothetically, somehow the wounds have to be healed. Some of the wounds have to be healed, Sudha, and also this tag with the BJP is not going away very soon. That remains there, and Ali Anwar Sahab, who actually coined the term Pasmanda, is right in a way that you know, there is a need to actually create harmony और ऐसे स्थिति बनाई जाए जिससे कि पहले शांति व्यवस्था हो। लेकिन सवाल ये उठता है सुधा, और मैं बहुत ही रेस्पेक्टफुली इस बात को कहूँगा यहाँ पर, कि आज प्रधानमंत्री ने जिनकी चर्चा की है, इसी तरह से अगर आप देखें उन नोमैड्स की, जो अक्सर खानाबदोश लोगों की चर्चा, बंजाराज की, इनका नाम अगर मैं एक साधारण सा सवाल पूछूं कि हम लोग कब सुनते हैं, तो साल में एक बार सुनते हैं जब बजट बनता है, उस समय उनका जिक्र आता था। लेकिन इस बार मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी का या बीजेपी का ये मेंशन कर देना पसमानदाज का ही काफी है, नहीं, काफी नहीं है, बट इसको मेन स्ट्रीम में लाना, इस पर चर्चा होना, News9 लाइव जैसे चैनल्स जो इस पर बातचीत भी कर रहे हैं और दोनों तरफ की बात को रख रहे हैं, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं वी हैव टू गिव इट टू द बीजेपी एज ऑफ नाउ फॉर एटलीस्ट ब्रिंगिंग इट। एंड रिमेंबर, एक छोटी सी बात मैं इतना ही कहूंगा कि इवन इफ दिस इज अ पॉलिटिकल स्ट्रोक, बीजेपी इस बात के लिए जानी जाती है कि वो बहुत ही शुरुआती दौर से ही आउटरीच का मतलब वन ऑन वन कनेक्ट से भी होता है। आप देखिए केरला में किस तरह से ईद के समय बीजेपी के कार्यकर्ता उनको जाकर गिफ्ट दे रहे थे, इस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी उन्होंने दिया। तो जो एक माइनॉरिटी का आउटरीच है वो ये इनके इन प्रकार तो कर ही रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट चलिए चर्चा तो शुरू हुई, अगर हम ये कहें अगर उसके, ऑफ कोर्स वी कैन टेक इट एज, यू नो, एटलीस्ट there's been a start of, that was a monologue, but then dialogue as well. At least we started
on something which is better than having nothing. My thanks are due Ali Anwar साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे डिबेट में आए. Dr. Anand, thank you very much. Manasvi Thapar, thanks very much. And Gautam Mukherjee, as always, thank you very much for joining us on this debate. So we'll have to see where this outreach goes, whether it will fructify into something solid so it is not just inanimate. Thanks for watching, and for all the other news and analysis, this is your destination always. News9 Live, keep watching. Europe's deadliest war since 1945. बाहर सायरन्स बजने लग गए थे.